Very good morning, all the participants. Today, before we start the session on section 60, let me put a question before you. Ramlal, in his individual capacity, has taken a loan. Since he could not pay, so proceedings have been initiated against Ramlal in DRT. We very well know that the adjudicating authority for individuals is DRT. Now, Ramlal stood a guarantor also for a loan taken by a company. And since that company also could not pay, so proceedings have been initiated against Ramlal in NCLT. Because we know the appropriate authority for initiating insolvency proceedings against personal guarantors to corporate debtors is NCLT. So now two proceedings are there. One in an NCLT against Ramlal in his capacity as personal guarantor, and another in DRT for recovery of the loan. So now the question arises whether these two proceedings will continue concurrently, or the proceedings of DRT will stand transferred to NCLT, or whether the proceedings of NCLT will stand transferred to DRT. So this is the basic question. So let us try to find out answer to this question and whether section 60 or any other section provides answer to our query. So I would request KB Kumarji to please start reading from section 60. Please, sir. सेक्शन 60 सब क्लास 3 वो पूरा पढ़ो क्या सर? नहीं, फर्स्ट से पढ़ लीजिए. Adjudicating authority for corporate persons. Yes. Adjudicating authority in relation to insolvency resolution and liquidation for corporate persons, including corporate debtors and personal guarantors thereof, shall be the National Company Law Tribunal, having territorial jurisdiction over the place where the registered office of the corporate person is located. So section 60 subsection 1 talks of two situations. Number 1, insolvency resolution and liquidation for corporate persons, including corporate debtors and personal guarantors. So if the case is of a personal guarantor, because personal guarantor may be an individual or a partnership firm or a non-corporate entity. Okay? Part 2 deals with corporate persons. Part 3 deals with non-corporate persons. That we all know already. So in case the insolvency or liquidation proceedings are against the corporate debtor or against a corporate person or a personal guarantor to a corporate debtor, then NCLT is the appropriate jurisdiction. So territorial jurisdiction will be decided based on the registered office of the corporate person. So this is section 60 subsection 1. Now this doesn't solve our question. Let us go to subsection 2 now. Yes. Section 2. Without prejudice to subsection 1 and notwithstanding anything to the contrary contained in this code, where a corporate insolvency resolution process or liquidation proceedings of a corporate debtor is pending before National Company Law Tribunal, an application relating to the insolvency resolution or liquidation or bankruptcy of a corporate guarantor or personal guarantor, as the case may be, of each corporate debtor shall be filed before such NCLT. Now it says, actually there could be two situations. Because as per Indian Contract Act, section 128, the liability of the guarantor is coextensive with that of the borrower. Now these proceedings are separate. Suppose the company doesn't pay the loan. Then first the banker will proceed normally against the company in case there are assets. Although it is not compulsory. They may directly choose to proceed against the personal guarantor who is having more assets. So it is up to the banker or it is up to the financial creditor against whom they want to proceed. But section 60 subsection 2 says one proceeding is already pending. That means proceeding relating to corporate debtor is pending. Now application of that personal guarantor is coming or corporate guarantor is coming, because guarantor could be a company, guarantor could be an individual, it could be a partnership firm. So whether it is the case of a corporate guarantor or personal guarantor, so that proceeding will also be filed before such National Company Law Tribunal, before such NCLT. That means insolvency and liquidation proceedings are ongoing against say XYZ Limited. Now, insolvency resolution and liquidation of that guarantor, whether it is a personal guarantor or corporate guarantor, now they have to be taken up. So they will also be taken up. They will also be filed before such NCLT.
So I hope now point number 1 and point number 2 are clear. What Yes, is the sir. difference between 1 and 2? The difference between 1 and 2 is, suppose a company is there, XYZ Limited is the company, and X is the guarantor because X is a director. The banker do not want to proceed against the company. They want to directly proceed against the director. Can they do so? The answer is yes, because section 128 says so. Now, where they will file the application? They will file the application where the based on the territorial jurisdiction of the NCLT, where registered office of the corporate person is located. This is answered by section 60 subsection 1. Second situation. Insolvency liquidation ongoing against the corporate person. Now they want to proceed against the corporate guarantor or personal guarantor. So in that case, that will also be taken up before such NCLT where the proceedings are already ongoing. But can you answer this question? They are saying in one, they are not referring to corporate guarantor. Why it is so? In 60 subsection 2, they are talking of corporate guarantors also. But in section 60 subsection 1, they are not talking of corporate guarantors. Is there any reason for this? भाई कोई रीजन है क्या? वहां तो लिखा पर्सनल गारंटर्स, सेकंड में लिख दिया कॉर्पोरेट गारंटर और पर्सनल गारंटर. तो क्या रीजन है? हाँ जी, एनीवन? The registered office of the corporate guarantor may be a different place. So maybe the jurisdiction of that corporate guarantor at that place where the registered office is situated of that corporate guarantor. But they have not mentioned in this. They have not elaborated. Now let us take the situation that XYZ took the loan and ABC Limited is the guarantor. Now the registered office of XYZ Limited is in Delhi and registered office of ABC Limited, which is the guarantor, is in Mumbai. So where you will file the petition? You want to proceed against the guarantor. It's where the registered office of the guarantor is situated. Yes. KB Kumarji, do you agree? Yes, sir. Okay. Now 3. 3 will throw light on this situation. 60 subsection 3. Yes, please. Yes, KB An Kumarji. insolvency resolution process or liquidation or bankruptcy proceedings of a corporate guarantor or personal guarantor, as the case may be, of the corporate debtor, pending in any court or tribunal, shall stand transferred to the adjudicating authority dealing with the insolvency resolution process or liquidation proceedings of a corporate debtor. So now this has answered our query. So Dhirji rightly said that suppose you directly want to proceed against the corporate guarantor, then we have to see the registered office of the corporate guarantor. But if we read section 60 subsection 3, so what it says? It says an insolvency resolution process or liquidation or bankruptcy proceedings of a corporate, and this will answer my question also, which I put initially, of a corporate guarantor or personal guarantor, as the case may be, of the corporate debtor, pending in any court or tribunal. So they have covered both court and tribunal. Shall stand transferred to the adjudicating authority dealing with insolvency resolution process or liquidation proceedings of such corporate debtor. That means, say XYZ Limited has took a loan, ABC Limited is the guarantor. First we tried to proceed against the guarantor and we filed the application in Mumbai because the registered office of the corporate guarantor is in Mumbai. But then thereafter proceedings were started against the person who took the loan, XYZ Limited, whose registered office is in Delhi, and we filed the petition in Delhi. So now that Mumbai petition will also stand transferred to Delhi. Is it correct? Correct, sir. With So this respect is to first 3, it is situation. correct, sir. Huh? What about the individual who has filed the case in
DRT. Yes, that is also covered. Na? It says personal guarantor pending an insolvency resolution He process. is a guarantor to the loan he has taken, not taken by the CD, na sir? Actually, it says insolvency resolution process or liquidation or bankruptcy proceedings of a corporate guarantor or personal guarantor. Ah. I am not a personal guarantor in DRT. I am an individual guarantor to the loan taken by me. Okay, Not, okay. No issues, no not. issues. So third is Ah, third is clear so far as guarantor proceedings, which were initially started in Mumbai, now they stand transferred to okay. That is Delhi. That okay, is sir. okay. Now let Ah. us read section 60, subsection 4. National Company Law Tribunal shall be vested with all powers of the Debt Recovery Tribunal as contemplated under Part 3 of this code for the purpose of subsection 2. So it says, so whatever are the powers of the DRT, so NCLT is also vested with these powers. Now let me ask you another question. Ramlal has took a loan in his personal capacity, and now proceedings have started because the adjudicating authority is the DRT. So you will file the petition in DRT. Now he is a personal guarantor also. So where you will file the petition? Personal guarantor NCLT में जाएगा sir. Okay, okay, okay. But suppose I myself Kumar has चलिए और taken. देख लीजिए और चलते हैं आगे देखते हैं कोई बात नहीं हाँ, फिफ्थ देखिए हाँ. आप Notwithstanding anything to the contrary contained योर वॉइस इज ब्रेकिंग एक्चुअली National Company Law Tribunal shall have jurisdiction to entertain or dispose of any application or proceeding by or against the corporate debtor or corporate person. B. Any claim made by or against the corporate debtor or corporate person, including claims by or against any of the subsidiaries situated in India, and any question of priorities or any question of law or facts arising out of or in relation to the insolvency resolution or liquidation proceedings of the corporate debtor of a corporate person under this code. 6. Notwithstanding anything contained in the Limitation Act 1963 or in any other law for the time being in force, in computing the period of limitation specified for any suit or application by or against the corporate debtor for which an order of moratorium has been made under this part, the period during which such moratorium is in place shall be excluded. So the question, our question, which we posed in the beginning, it remains as it is. Yes, sir. So, in the DRT, Yes. whether any moratorium has been given to the individual guarantor? No, there is no such concept. There is no such concept. So that Because it's a recovery mechanism basically. okay. So that means the case can also be filed. So I think our answer will be something like this. After the commencement of the provisions of Part 3 of the Code, Debt Recovery Tribunal shall be the adjudicating authority for individual insolvency resolution or bankruptcy proceedings. If any matter is pending with DRT relating to any personal guarantor, the same shall be transferred to the bench of the tribunal dealing with corporate insolvency resolution or liquidation proceedings of a corporate debtor to which such personal guarantor is a guarantor. Thus, DRT Yes, will continue to deal with the matter of individual unless the corporate insolvency resolution process or liquidation proceedings are initiated against corporate debtor to whom the personal guarantor is the guarantor. So actually, it says then subsection which section, sir? That is which section that you are reading, sir? This is commentary actually. Commentary. Sir, give me 1 minute time, sir. Yes, yes. Before the notification of this personal guarantor,
an individual who has taken a loan, who has given personal guarantee to XCD, it used to file at DRT. Right. Then whatever the case is pending at DRT after this notification is transferred to NCLT because Right. jurisdiction has been changed. Right. Okay. Now suppose I am Kumar. I am director. I an individual capacity. I have given a personal guarantee to XYZ Limited. Right. In the same bank, I have taken a housing loan for my house. Right. This housing loan, which is taken by me, that will continue, though I am a guarantor or in personal capacity, that Okay. will continue with DRT. Okay. With respect to personal guarantor, suppose if I filed it the same case before DRT, it shall be transferred to NCLT after notification of this provisions personal guarantor in 2019. That is my opinion, sir. Okay. 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 Thank you, sir. Now, section 61. Appeals and appellate. So we can discuss further in the group on this. Okay, sir. Section 61. Appeals and appellate authority. Yes, please. 61. Please, KB Kumarji, please. Notwithstanding anything to the contrary contained under the Companies Act 2013, any person aggrieved by the order of the adjudicating authority under this part may prefer an appeal to the National Company Law Appellate Tribunal. Every appeal under subsection 1 shall be filed within 30 days before the National Company Law Appellate Tribunal. Provided the National Company Law Appellate Tribunal may allow an appeal to be filed after expiry of the said period of 30 days if it is satisfied that there was sufficient cause for not filing the appeal, but such period shall not exceed 15 days. Third, an appeal against an order approving a resolution plan under Section 31 may be filed on the following grounds, namely, the approved resolution plan is in contravention of the provisions of any law for the time being in force. Actually, we have to keep in mind that there are specific grounds on which appeal can be filed. It's not that against every order of the adjudicating authority you can file the appeal. So you have to specify the particular point where for which you are filing the application. So these are the scenarios which are given in section 61 subsection 3. So first is that the approved resolution plan is in contravention of the provisions of any law for the timing in force. So what could be the instances? What could be the instances where you could say that approved resolution plan is in contravention? Because this contravention of law, first of all, RP will ensure that there is no contravention because it is given in section 30 also. So if we read section 30, let me take you to section 30. 30 clause E, sir. Yes. 2E. 30, section 30, subsection 2, subsection E, it says it does not contravene any of the provisions of the law for the timing in force. That means the RP has taken care of this aspect first. Then section 31 also. Now section 31 says section 31 says that the conditions meets the requirements. Section 31 subsection 1. That the resolution plan meets the requirements of section 30 subsection 2. And 30 subsection 2 talks of contravention also. So adjudicating authority has also satisfied. So both the persons are satisfied. And now this appeal is being filed. That it is in contravention. RP has already satisfied himself that there is no contravention. Adjudicating authority has already satisfied that there is no contravention. But now still this appeal is being filed. So what could be the reasons for filing this appeal? Maybe that there is a change of law. And the new law, it is in contravention. ऐसा हो सकता है ना?
भाई जब प्लान पास हुआ उस टाइम कॉन्ट्रावेंशन नहीं था, बाद में कोई नया लॉ आ गया। सपोज कोई ऐसा कंट्री के साथ हमारा कोई एग्रीमेंट है या बिजनेस है जो कि अब अलाइन कंट्री है, ऐसा हो सकता है इन ए सिचुएशन ऑफ वॉर। सो इट मतलब बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशंस हैं जिसमें ऐसा हो सकता है। नॉर्मली इट विल नॉट बी देयर, बट देयर कुड बी अ सिचुएशन वेयर देयर इज अ चेंज ऑफ लॉ और चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस व्हिच मेक्स द अर्लियर पोजीशन नाउ ए कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। Next. Because by reading section 30 and section 31 we are revising our concepts also, so that is also important, है ना। चलिए, now next point. Two, sir. There has been material irregularity in exercise of powers of the resolution professional during the CARP Hmm. period. So it says material irregularity in exercise of powers by the RP, because RP is given certain powers, and if there is any material, so the concept is the stress is on material irregularity, not on just some shortcomings. So if there is any material irregularity which the appellant can point out, what could be the instances? ऐसा कोई इंस्टेंस हो सकता है क्या? सपोज यू आर एन अनसक्सेसफुल रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, ठीक है, you filed a resolution plan but your resolution plan was ignored. Now you are trying to file an appeal और आप बोल रहे हो भैया आरपी के अगेंस्ट में मुझे कंप्लेंट करनी है, तो क्या रीजन हो सकता है? मेटीरियल इरेगुलरिटी क्या हो सकती है? मे बी ए प्राइवेट कम्युनिकेशन बिटवीन द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट इफ इज, भाई आजकल तो क्या है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स भी मिल जाते हैं, सीडीआर मिल जाती है, तो सीडीआर से ही मे बी एबल टू प्रूव दैट दिस आरपी वाज इन प्राइवेट कम्युनिकेशन विद द सक्सेसफुल रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, or the successful resolution applicant is related, he was influenced in his decision somewhere or the other. So these could be some instances कि भाई you have to put the allegation on the RP in this case, material irregularity in contravention in exercise of the powers. Yes, now next point. Three, the debts owed to operational creditor of the corporate debtor have not been provided for in the resolution plan in the manner specified by the board. Now let us see what is the manner in which it is specified by the board. So regulation section 30 subsection 2 answers this question, and it says that you ensure at least the liquidation value to the operational creditors because they don't find a place in the COC. So at least liquidation value or whatever money could have been payable to them in the event of liquidation, because it is a imaginary situation. It is a visualization only because during CIRP no liquidation is taking place. So section 30, while ensuring the compliance of section 30 subsection 2 regarding the payment to be made to operational creditors, what we have to visualize is that had there been a liquidation, then what the operational creditors would have got and whether they are getting this money in the resolution plan or not. This is the situation. I hope it is clear. Supriya ji? Yes, sir. Yes. So now next point. And if there is no such provision, then you can file an appeal. Yes, KB Kumar ji, next point. Yes. The debts owed to operational creditor, that is over, na sir? Yes. Insolvency resolution process costs have not been provided for repayment in priority to all the debts, or the resolution plan does not comply with any other criteria specified by the board. Yes, so these are the points, these are the grounds on which appeal may be filed. Can you think of any other ground apart from this? By suppose you file an appeal on a ground which is not here. So you have to fit in this criteria. You will point out some regulation, say any other criteria specified by the board. Okay? The resolution plan does not comply with any other criteria specified by the board. Suppose the COC decided as per section 25(2)(h), the COC decides the criteria. Suppose that criteria was relaxed. So you can point out that thing. चलिए,
Section 61 subsection 4. Yes, please. Madam, can you read, please? Supriya ji, can you read this? Section 61 subsection 4. Supriya ji. An appeal against that one is an appeal against a liquidation order passed under section 33 or subsection 4 of section 54L or subsection 4 of section 54N may be filed on grounds of material irregularity or fraud committed in relation to such a liquidation order. So section 61 subsection 4 says, because this 54 A to P, they are talking of that pre-pack insolvency resolution Yes, process. So it is referring to CIRP or pre-pack. It may be filed on grounds of material irregularity or fraud committed in relation to such a liquidation order. So 61, 1 to 3. So they were 3 was talking of CIRP and now 4 is talking of liquidation. Because there might be material irregularity or fraud committed in relation to such a liquidation order. Yes. So 61 subsection 3 talks of CIRP and section 61 subsection 4 talks of liquidation. Yes, please. Now next. An appeal against an order for initiation of corporate insolvency resolution process passed under subsection 2 of section 54O may be filed on grounds of material irregularity or fraud committed in relation to such an order. So 54O, we already know. 54O means 0. 0 means from pre-pack, you come to CIRP. So this is the situation which we have already covered. So suppose there is some infirmity in that order. So then also appeal can be filed if there is any material irregularity or fraud. Yes. Now 62. Appeals to Supriya ji, Supreme Court. one question still remains. With which we started. So we started with a question that there is an individual who has taken 2 loans. One housing loan in his personal capacity for which proceedings are ongoing in DRT. Another, he is a guarantor also in a loan taken by a company. So for that, proceedings are going on in NCLT. So whether proceedings which are going on in DRT will stand transferred or they will continue concurrently, this is the question. So we'll talk further on this in the group because in section 61 we could not find a direct answer to this. And till now, our understanding is that both the proceedings can go on concurrently. Yes, sir. Now 62. Appeal to Supreme Court. Any person aggrieved by an order of the So in national 61, company, please answer this question. What is the time period for filing an appeal? 30 days. And any extension allowed? 15 days. Right. Okay. Now section 62. Any person aggrieved by an order of National Company Law Appellate Tribunal may file an appeal to the Supreme Court on a question of law arising out of such order under this code within 45 days from the date of receipt of such order. So actually, there is one important thing here. It says question of law. It's not saying question of fact. Question of law arising out of such order. So first of all, there has to be question of law. And there is no mention of High Court. Because after NCLAT, you are directly jumping to Supreme Court. But the point is on a question of law. But when we read section 61, so it says question of law or question of fact. The question of fact. Hmm? Question of fact. It is not talking about anywhere about the law. कहाँ? सर मतलब ये बोल रहा है प्रोसीजरल इश्यूज को लेके बात कर रहे हैं ना सारे किसमें 60 में या 61 61 में? 61 में सर नहीं 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 दोनों चीज एक मिनट 60 में देख लीजिए 60 में क्या कहता है 60 में देख लीजिए सेक्शन 60 सब सेक्शन 5 सब सेक्शन सी एक बार पढ़ लीजिए सेक्शन 60 सब सेक्शन 5 सब सेक्शन सी पढ़िए आप ही पढ़िए क्या लिखता है any question of priorities or any question of law or facts arising out of
or in relation to insolvency resolution or liquidation proceedings of the corporate debtor or corporate person under this code. तो अब एनसीएलटी के पास ही जुरिस्डिक्शन आ गई, लॉ की भी आ गई और फैक्ट्स की भी आ गई। फैक्ट्स की भी आ गई, ठीक सर। तो ऐसा नहीं है कि लॉ क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, एनसीएलटी भी डील कर सकता हाँ जी सर, है ना। और हाँ जी। एनसीएलटी के बाद एनसीएलटी में आ जाएगा। हाँ बट जी। सुप्रीम कोर्ट में क्या है, सुप्रीम कोर्ट में क्या रिस्ट्रिक्शन है, क्वेश्चन ऑफ लॉ की ही बात लॉ, कर रहा है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट की बात नहीं कर रहा वो। राइट। तो दिस इज द डिफरेंस, 60 और 61 में क्या है, बोथ आर कवर्ड, क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स। बट 62 में ऐसी बात नहीं करता, 62 में क्या बोलता है, ओनली क्वेश्चन ऑफ लॉ। यस, है ना। दैट इज अनदर थिंग दैट एवरीबडी अप्रोचेस सुप्रीम कोर्ट, बट वो इस रूट से नहीं जाते, वो क्वेश्चन ऑफ लॉ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट की बात ही नहीं करते। दे टॉक ऑफ वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड दे फाइल पिटिशन बाय वे ऑफ रिट्स। वो रिट्स की तरह से फाइल करते हैं इसको कि भाई हमारा वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट हुआ है, आवर फ्रीडम ऑफ बिजनेस हैज बीन कर्टेल्ड, इस तरह से बात करते हैं। तो तभी सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन करता है। Sir, then why we are having high court judgments? High court judgments are there because for sometimes they want to ensure the compliance with the law. Because say sales tax is a state matter. And for violation of fundamental rights, you can approach High Court as well as Supreme Court. As per Article 32, you can approach directly the Supreme Court. And as per Article 226, you can approach the High Courts. So that is why they are judgments. तो हाई कोर्ट में कैसे अप्रोच करते हैं, बाय वे ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आप जितनी भी पिटीशन देखेंगे वो लिखा होगा उसके ऊपर एसएलपी, है ना, इस तरह से। यस प्लीज। तो सुप्रिया जी पढ़िए प्लीज। 62 subsection 2. The Supreme Court may, if it is satisfied that a person was prevented by sufficient cause from filing an appeal within 45 days, allow the appeal to be filed within a further period not exceeding 15 days. Yes. So only two things to remember in section 62. Number one, question of law. ठीक है। Second thing, 45 days initially and then 15 days extension. ठीक है। Now 63. Civil court not to have jurisdiction. No civil court or authority shall have jurisdiction to entertain any suit or proceedings in respect of any matter on which National Company Law Tribunal or National Company Law Appellate Tribunal has jurisdiction under this code. Civil court not to have jurisdiction. ठीक है, सिविल कोर्ट का कोई jurisdiction नहीं है। Now 64. Expeditious disposal of applications. Where an application is not disposed of or an order is not passed within the period specified in this code, the National Company Law Tribunal or Appellate Tribunal, as the case may be, shall record the reasons for not doing so within the period so specified. And the So now it is President of talking of two things. Application is not disposed of or order is not passed, because there is certain timelines for adjudicating authorities also, like 14 days timeline is there. ठीक है। तो in this case, the NCLT or NCLAT shall record reasons for not doing so within the period so specified. And there is a special power which is given to the president of NCLT or chairperson of NCLAT, after taking into account the reasons so recorded, extend the period specified in the act but not exceeding 10 days. ठीक है। तो यहां पर उसको पावर दी गई है कि they can extend, they have got special powers to extend the period not exceeding 10 days. Yes. लेकिन आप क्या सोचते हैं, इसके हिसाब से तो कोई भी सिचुएशन में, जैसे अगर 14 डेज का टाइम है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास, 10 दिन ये एक्सटेंड कर दिया, तो 24 डेज में तो हर एक बात का डिसीजन हो जाना चाहिए, बट होता तो नहीं। केबी कुमार जी। प्रेसिडेंट के पास तो जाता ही नहीं, बस पहली बात। हाँ हाँ। प्रेसिडेंट ऑल दिस ड्यूरेशन इज discretionary, not Yes, mandatory. it is directory only, not mandatory, Directory. has been held by the। अभी 3-3 साल चल रहे एक केस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी सर, what is the actual meaning of material irregularity, sir? In which section? 61. Yes, 61.
So material irregularity. It says material irregularity in exercise of the powers by ERP. हाँ हाँ, तो I was referring to a situation. No, suppose RP 61 first is talking of CIRP situation. ठीक है, हाँ 61 सब 61 नहीं 60 है ना, 60 सबसेक्शन 3, 60 सॉरी 61 सबसेक्शन 3 सब सबसेक्शन 2 है ना, दिस इज व्हाट यू हाँ आर रेफरिंग टू। यस सर यस सर हाँ, तो इसमें क्या बोलता है, जैसे आई टोल्ड यू अ केस, सपोज देर आर 4 रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स, ठीक है, वन ऑफ द प्लान्स वाज सक्सेसफुल। नाउ बिकॉज देर वॉज एन अनसेटिस्फाइड रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, ही वॉज फीलिंग एग्रीव्ड, भाई मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, है ना, तो ही वॉज ट्राइंग टू गेट इन टच विद द आरपी, बट आरपी डिड नॉट एंटरटेन हिम। वो क्या करेगा, सपोज कॉल रिकॉर्ड्स ले आता है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, and he is able to establish that the RP was in touch with the successful resolution applicant in private communication also, प्राइवेट कम्युनिकेशन हाँ है ना। So हाँ he will try to point out something similar, या बोलेगा कोई गिफ्ट ले लिया, कोई एम्प्लॉयमेंट दिला दिया बेटे को, कुछ तो बोलेगा ना इस तरह से कि भाई he हाँ has acted against his powers, because yes, powers हाँ of RP are also defined. So if he has exceeded his powers, so then, other suppose he has accommodated the successful resolution applicant in a way which was not appropriate. हाँ So in that situation, he will be able to point out material irregularity, because he will say he has exceeded his powers. यस सर बस यही होगा. Sometimes you do not keep record of each and everything. So हाँ maybe that there were some negotiations or some say arrangements which were not recorded in writing. That is why stress is on recording each and everything. Documentation. There is a stress on documentation. If you are not able to prove, then you cannot say that this was agreed to by the COC or by the RP or applicant. So there could be some say gaps in the papers also. So if he is able to establish, so then naturally the NCLAT will allow the appeal. यस सर बाकी थैंक यू तो सर ऐसा ना, it will depend upon facts of the case. So we can just imagine, we can just visualize the various situations. Now 64 हो ही गया है ना जी, हो yes, गई सर 64(2). No injunction shall be granted by any court, tribunal, or authority in respect of any action taken or to be taken in pursuance of any power conferred on the National Company Law Tribunal or Appellate Tribunal under this code. So it says, because earlier, prior to IBC, the situation was that whenever some proceeding was initiated, they brought the stay order of the High Court or Supreme Court. So now it says no injunction shall be granted by any court, tribunal, or authority in respect of any action taken or to be taken in pursuance of any power conferred on NCLT or NCLAT. So whatever is in the powers of NCLT or NCLAT, you cannot bring any stay order against that power. That is the meaning. So that there is expeditious disposal of applications. But still, interlocutory applications are being filed in hundreds. So that is why there is delay. अभी वो क्या कर रहे हैं, यहां पर ही आईए फाइल कर रहे हैं, एनसीएलटी में ही फाइल कर रहे हैं, एनसीएलएटी में ही फाइल कर रहे हैं, बाहर का बात छोड़ दीजिए, क्यों केपी कुमार जी, यस सर है ना। तो वहां क्या है, वो पता चल रहा है 200 इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन पड़ी हुई है, अब सबका डिस्पोजल होगा तब केस आगे बढ़ेगा। अगर रेजोल्यूशन प्लान अप्रूवल के लिए आया ना फिर ऐसा ही मेटीरियल इरेगुलरिटीज के अंदर 10 आईएएस फाइल होता है हाँ बिल्कुल जो बिल्कुल। अनसक्सेसफुल आरए रहते हैं ना हाँ हाँ, ही यस, विल फाइल वो लॉट दे ऑफ फील आईएएस एग्रीव्ड, वो तो है ही, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ चलिए 65, यस सुप्रिया जी। If any person initiates the insolvency resolution process or liquidation proceedings fraudulently or with malicious intent for any purpose other than the resolution of insolvency or liquidation, as the case may be, the adjudicating authority may impose upon such a person a penalty यस which shall not be
less than 1 lakh rupees, but may extend to 1 crore rupees. So now the stress is on initiation. Here, what section 65 says, if any person initiates the insolvency resolution process or liquidation process. So the intention is bad. Okay? So we will find some other instances also where there is no question of intention also. But here, if the intention is bad, intention behind initiation of CIRP or liquidation, then penalty 1 lakh to 1 crore rupees. It shall not be less than 1 lakh rupees, but may extend to 1 crore rupees. On whom this penalty will be levied? Applicant. Yes, on the person who has initiated the insolvency resolution process or liquidation process. Right, very good. Now, 65 subsection 2. If any person initiates voluntary liquidation proceedings with the intent to defraud any person, the adjudicating authority may impose such a person a penalty which shall not be less than 1 lakh rupees but may extend to 1 crore rupees. So, voluntary liquidation, they have separately covered. In first, they covered CIRP and liquidation. And now, 65 subsection 2, voluntary liquidation. Penalty is same. And third is pre-pack. In pre-pack also, penalty is same. So 1 lakh to 1 crore. So 65. 65 talks of initiation. Okay? With a malicious intention or fraud. Now 66. Fraudulent trading or wrongful trading. If now what is the during difference between fraudulent trading or wrongful trading? Because fraudulent is separate, wrongful is separate. Wrongful means without applying mind. Reckless. Fraudulent means intention is bad. In wrongful trading, intention may not be bad, but you are not applying your judgment or say what an ordinary person will do. So basically, you are doing something wrongful. Maybe not with a bad intention. Yes, please. 66-1. If during the CIRP process or liquidation process, it is found that any business of the corporate debtor has been carried on with intent to defraud creditors of the corporate debtor or for any fraudulent purpose, the adjudicating authority may, on the application of the resolution professional, pass an order that any person who were knowingly parties to the carrying on of the business in such manner shall be liable to make such contributions to the assets of the corporate debtor as it may deem fit. So now, during CIRP or liquidation, it says any business of the corporate debtor has been carried on with the intent to defraud creditors of the corporate debtor or for any fraudulent purpose. Maybe say the billing business, fake billing. Okay? The adjudicating authority may, on the application of the RP, pass an order that any persons who are knowingly parties to the carrying on of the business in such manner shall be liable to make such contributions to the assets of the corporate debtor as it may deem fit. So it fastens personal liability. It fastens the liability on the persons who are parties to the carrying on, liable to make such contributions. So that means they will be required to personally contribute. So here there is a personal liability. Okay? 66. Yes, 66 subsection 2. 2. On an application made by a resolution professional during the CIRP process, the adjudicating authority may, by an order, direct that the director or partner of the corporate debtor, as the case may be, shall be liable to make such contribution to the assets of the corporate debtor as it may deem fit, if before the insolvency commencement date, such director or partner knew or ought to have known that there was no reasonable prospect of avoiding the commencement of a CIRP process in respect of such corporate debtor. So here, what is important is, this talks of a situation before the insolvency commencement date. So it talks of a twilight zone. That means the darkness is coming. Darkness is approaching. There is no reasonable prospect of avoiding commencement of CIRP. That means the business is sinking. So in that case,
the director or partner shall be liable. He shall be liable to make such contributions. He ought to have known, and such a director or partner did not exercise due diligence in minimizing the potential loss to the creditors of the corporate debtor. That means he knew before CIRP process has started, before the insolvency commencement date, he knew or ought to have known because he is running the business. And suppose he is running the business in a reckless manner or in a fraudulent manner. So that means he knows that the ship is going to sink and he doesn't make any efforts. So then he will be held personally liable. Yes, please. 3. 66.3. Notwithstanding anything contained in this section, and no application shall be filed by a resolution professional under subsection 2 in respect of such default against which initiation of CIRP process is suspended as per section 10A. So section 10A, as we all know, it talks of the pandemic period. So if there is a default during the pandemic period, then this application cannot be filed because during pandemic period there were special circumstances, so that period is excluded. Yes, please. Explanation. Hmm. For the purpose of this section, a director or partner of the corporate debtor, as the case may be, shall be deemed to have exercised due diligence if such diligence was reasonably expected of a person carrying out the same functions as are carried out by such director or partner, as the case may be, in relation to the corporate debtor. So now, because it is talking of a hypothetical situation that you did not carry out the functions diligently, you did not exercise due care. So we have to see what is reasonably expected. Suppose there is an ordinary person, so what he will do in such circumstances? So if whatever he has done, if it was reasonably expected of a person carrying out the same functions, so then he will not be held personally liable. But if he did not do any such thing to contain the damage, so then he will be held personally liable. There could be fraudulent trading, there could be wrongful trading. It could be uh, some actions even before the insolvency commencement date. Okay? So both the periods are covered. Now 67. Proceedings under section 66. Hmm. Where the adjudicating authority has passed an order under subsection 1 or subsection 2 of section 66, as the case may be, it may give such further directions as it may deem appropriate for giving effect to the order, and in particular, the adjudicating authority may provide for the liability of any person under the order to be a charge on any debt or obligation due from the corporate debtor to him, or on any mortgage or charge or any interest in a mortgage or charge on assets of the corporate debtor held by or vested in him, or any person on his behalf, or any person claiming as assignee from or through the person liable, or any person acting on his behalf. Now what is the meaning? The meaning is, suppose as a result of this wrongful trading or fraudulent trading, some liability has been cast upon the corporate debtor. So then who will pay for that liability? This person, director or partner. Provide for the liability of any person under the order to be charged on any debt or obligation due from the corporate debtor to him. Okay? The liability is in the books of the corporate debtor, but it is because of the fraudulent trading or wrongful trading. So then the adjudicating authority will order that, okay, Mr. X, you pay from your pocket. Okay? This is the meaning. Or you create a charge held by or vested in him, or on any person on his behalf, or any person claiming an assignee from or through the person liable, or any. The stress is on the personal liability of the director or partner who has acted fraudulently and he did not do anything to contain the damage. So then he will be fastened with personal liability. This is the meaning basically. Yes, please. B. From time to time, make such further directions as may be necessary for enforcing any charge imposed under this section. Explanation. For the purpose of this section, assignee includes a person to whom
or in whose favor, by the directions of the person held liable under Clause A, the debt, obligation, mortgage, or charge was created, issued, or transferred, or the interest created, but does not include an assignee for valuable consideration given in good faith and without notice of any of the grounds on which the declaration has been made. Directions have been made. Yes. Where the adjudicating authority has passed an order under subsection 1 or 2 of section 66, as the case may be, in relation to a person who is a creditor of the corporate debtor, it may, by an order, direct that the whole or any part of any debt owed by the corporate debtor to that person and any interest thereon shall rank in the order of priority of payment under section 53 after all other debts owed by the corporate debtor. So now, section 67, subsection 2, it is talking of a creditor of the corporate debtor. Suppose creditor of the corporate debtor was also involved. ठीक है? How the creditor was involved? Suppose he was engaged in some fabricated documents or something similar. So in that case, but creditor is otherwise entitled to his amount. So his priority will be lowered. This is the meaning. ठीक है? Shall rank in the order of priority of payment under section 53 after all other debts owed by the corporate debtor. Suppose there is a secured creditor and he is also found indulging in some sort of fraudulent or wrongful trading. So then what will happen? His order of priority will be lowered. This is the meaning. ठीक है? चलिए 67A. It is talking of pre-pack. So in case of pre-pack also, it says because pre-pack came at a later date, it came in 2021. So that is why section 67A was introduced. Earlier it was 67 only. So it says on and after the pre-packaged insolvency commencement date, where an officer of the corporate debtor manages its affairs with the intent to defraud creditors of the corporate debtor or for any fraudulent purpose, so adjudicating authority may impose a penalty upon any such officer. ठीक है? 1 लाख to 1 crore rupees. ये हो गया हमारा सेक्शन 67A. नेक्स्ट देखते हैं. नाउ ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज 68. इसके हम जो है एक चार्ट से देख लेते हैं इसको. ये पेनल्टीज अपना 68 to 77A तक है ना. तो लेट मी शो यू ए चार्ट. तो चार्ट से इसको कर लेते हैं. 1 मिनट लगेगा. वो चार्ट रेडी है क्या आपके पास सुप्रिया जी? पेनल्टी No. चार्ट. नहीं, मैं निकालता हूँ. जस्ट अ मिनट. ये आपको मिल जाएगा सेक्शन इसको. यहाँ मिल जाएगा. हाँ. जस्ट गिव मी 1 मिनट. मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ.
Yeah. चार्ट हो गया आपको पेनल्टी। तो दिस इज द पेनल्टी चार्ट। ये चार्ट आपको नजर आ रहा होगा। तो इज इट विजिबल नाउ? Yes, sir. हाँ 68। ठीक है, तो 68 पढ़ लीजिए। बिकॉज इसमें ध्यान क्या रखना है आपको, व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड, यू हैव टू कीप इन माइंड दैट देयर आर पेनल्टीज which may be levied on the corporate debtor, on the officer, on RP, liquidator, any person, किसी के ऊपर भी पेनल्टी लगाई जा सकती है। ठीक है, और फिर उसमें दो चीजें हैं, एक तो है फाइन और दूसरा है इम्प्रिजनमेंट, है ना। और हर एक चीज डिफाइंड है, किसके ऊपर पेनल्टी लगेगी, कितनी पेनल्टी लगेगी। तो सेक्शन 68, 68 एक बार पढ़ लीजिए। एंड यू हैव टू कीप द बुक ऑल्सो रेडी विथ यू। बुक भी होनी चाहिए और ये चार्ट भी होना चाहिए, तो जल्दी समझ में आ जाएगा। 68 टॉक्स ऑफ पनिशमेंट फॉर कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, भाई आपको क्या करना है, यू हैव टू पे टू द क्रेडिटर्स, है ना। एंड सपोज यू कंसील एनी प्रॉपर्टी, सो देन व्हाट इज द पेनल्टी एंड ऑन whom दिस पेनल्टी इज लेविएबल। तो 68 एक बार पढ़ लीजिए मैडम, आप बुक से पढ़िए और ये चार्ट आपके सामने रहेगा। Where an officer of the corporate debtor has, within the 12 months immediately preceding the insolvency commencement date, willfully concealed any property or part of such property of the corporate debtor, or concealed any debt due to or from the corporate debtor of the value of 10,000 rupees or more, हम्म or fraudulently removed any part of the property of the corporate debtor of the value of 10,000 rupees or more, हम्म or willfully concealed, destroyed, mutilated, or falsified any book or paper affecting or relating to the property of the corporate debtor or its affairs, or willfully made any false entry in any book or paper affecting or relating to the property of the corporate debtor or its affairs, or fraudulently parted with, altered, or made any omission in any document affecting or relating to the property of the corporate debtor or its affairs, or willfully created any security interest over, transferred, or disposed of any property of the corporate debtor which has been obtained on credit and has not been paid for unless such creation, transfer, or disposal was in the ordinary course of the business of the corporate debtor, or willfully concealed the knowledge of the doing by others of any of the acts mentioned in clauses C, D, or clause E, or at any time after the insolvency commencement date committed any of the acts mentioned in subclause A to F of clause I, or has the knowledge of the doing by others of any of the things mentioned in subclauses C to E of clause I, or at any time after the insolvency commencement date, taken in pawn or pledge or otherwise received the property knowing it is to be so secured, transferred, or disposed, such officer shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 3 years, but which may extend to 5 years, and with fine which shall not be less than 1 lakh rupees, but may extend to 1 crore rupees, or with both. हम्म तो अब आप देखिए, आपने पूरा सेक्शन पढ़ लिया। ठीक है, सेक्शन 68 कंप्लीट हो गया आपका। Provided that is हम्म there. हाँ, पढ़िए पढ़िए, प्रोवाइडेड दैट। Provided that nothing in this section shall render a person liable to any punishment under this section if he proves that he had no intent to defraud or to conceal the state of affairs of the corporate debtor. हाँ, नाउ यू हैव रेड दिस सेक्शन, यू हैव सीन द चार्ट आल्सो। सो ये चार्ट में सब कुछ कवर हो गया, ऑलमोस्ट कवर हो गया सारा कुछ। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन सेक्शन 68,
whether it covers only the period after insolvency commencement date or it covers the period before insolvency commencement date also. So before 1 year. हाँ, within 12 months months. immediately preceding the insolvency commencement date. Commencement date. ठीक है, या तो विद इन 12 months इमीडिएटली प्रीसीडिंग या एनी टाइम आफ्टर द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। एक तो ये बात ध्यान में रखनी है। और ये पेनल्टी लगनी किसके ऊपर है? ऑन हुम दिस पेनल्टी विल बी लेविड? Officer. ऑफिसर। ठीक है, एनी ऑफिसर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। अच्छा, 1 लाख टू 1 करोड़ और 3 to 5, सो वी कैन रिमेंबर इट 1 लाख टू 1135। तो हम इसका कोड क्या लिख देंगे? 1135, याद करने के लिए 1135। 1 लाख टू 1 करोड़, 3 years to 5 years और विद बोथ। ठीक है। अच्छा, पेनल्टी लगेगी कैसे? क्या डायरेक्टली इसको जेल भेज देगी एनसीएलटी? क्या होगा भाई? लिखा है इम्प्रिजनमेंट, तो एनसीएलटी ने डिसीजन लिया और कह दे कि जाओ इसको जेल में, तिहाड़ जेल में बंद कर दो, क्या होगा? पेनल्टी लगेगी कैसे? To deal with special code sign, sir. यस, सो देयर इज ए प्रोविजन फॉर स्पेशल कोर्ट्स। और ये जो है, ये स्पेशल कोर्ट्स वाला प्रोविजन कहां पर दे रखा है आपको? सेक्शन इज 236। सेक्शन 236 says ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस बाय स्पेशल कोर्ट्स। क्या कहता है? नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ऑफेंसेस अंडर दिस कोड शैल बी ट्राइड बाय स्पेशल कोर्ट। नो कोर्ट shall take cognizance of any offense punishable under this act save on a complaint made by the board or the central government or any person authorized by the central government in this behalf। ठीक है, तो आपको इस सेक्शन को 236 के साथ में पढ़ना है। ठीक है, चलिए, तो 68 तो क्लियर हो गया। 68 पर कोई डाउट? नहीं सर। भाई मान लीजिए एक ऑफिसर है कॉर्पोरेट डेटर। अच्छा, ऑफिसर की डेफिनेशन कहां दे रखी है? 2 subsection 19. है 5 subsection 19. राइट, वेरी करेक्ट। तो सेक्शन 5 सबसेक्शन 19, वो दैट टेक्स यू टू कंपनीज एक्ट और Companies Act एलएलपी 2 एक्ट। LLP Act. 2 हाँ, subsection 60 of Companies बिल्कुल Act. बिल्कुल, बेसिकली दैट इंक्लूड्स डायरेक्टर, केएमपी एटसेट्रा, PMP. है ना? चलिए, तो 68 तो क्लियर हो गया। अब चलिए, और इसका कोड क्या रह गया हमारा? 1135। आपको याद करने के Sir, लिए 1135। who will file this application, sir? एक्चुअली नथिंग इज रिटन, इट सेज बेसिकली it deals with commission of offense, so application could be filed by anybody, that is not important, but the officer was found guilty। Uh-huh. ठीक है, so basically the stress is on commission of the offense। it may be filed by the CD, it may be filed by RP, NCLT may take so moto action also, है ना? कुछ भी हो सकता है। तो ये नहीं लिखा कि कौन एप्लीकेशन फाइल करेगा, बट ये है कि इट मे टेक सो मोटो एक्शन ऑल्सो बेस्ड ऑन प्रेस रिपोर्ट्स, एनीथिंग। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ऑफिसर के घर में रेड हो गया इनकम टैक्स का, और वहां बहुत सारी प्रॉपर्टी मिल गई, तो एनसीएलटी उसी बेसिस पे इनिशिएशन स्टार्ट कर सकता है ना? नाउ 69। Punishment for transactions defrauding एक creditors. मिनट देखना, ये जो है ये क्या हो गया? 69, एक मिनट। ये 69, यस। Punishment for transactions defrauding creditors. हाँ, अब आप ये देखिए कि 68 में क्या था? 68 में भी खैर विलफुल कंसीलमेंट है या फ्रॉडुलेंट रिमूवल है या विलफुली कंसील्ड है, बेसिकली वहां पर भी इंटेंशन इज बैड है 68 में भी, है ना? बट इसमें क्या आ गया? पनिशमेंट फॉर ट्रांजेक्शंस डिफ्रॉडिंग द क्रेडिटर्स। ठीक है, हाँ जी If an पढ़िए। officer of the corporate debtor or the corporate debtor has made or caused to be made any gift or transfer of or charge on or has caused or conveyed in the execution of a decree or order against the property of the corporate debtor, has concealed or removed any part of the property of the corporate debtor within 2 months before the date of any unsatisfied judgment
decree, or order for payment of money obtained against the corporate debtor. So there are two important things here. Number one, punishment is on officer or the CD. ठीक है, ऑफिसर ऑफ द सीडी है और सीडी पर भी है, एन ऑफिसर ऑफ द सीडी और द सीडी. So either officer of the CD has done this thing or corporate debtor has done. So what they have done is, suppose a decree has been passed against the corporate debtor. ठीक है, अब डिग्री पास होने का पता चल गया उसको, और डिग्री पास होने से 2 महीने पहले उसने क्या किया, कंसील कर दिया या रिमूव कर दिया एनी प्रॉपर्टी ऑफ द. और प्रॉपर्टी का डेफिनेशन आपको कहां से लेना है, सेक्शन 3 सबसेक्शन 27 से. प्रॉपर्टी मतलब कैश भी हो सकता है, प्रॉपर्टी मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, है ना. तो इवन इफ इट इज डन विद इन 2 months बिफोर द डेट ऑफ एनी अनसेटिस्फाइड जजमेंट डिग्री, तो फिर भी इसके अंदर आ जाएगा. और पेनल्टी किस पर है, ऑफिसर पे ही या कॉर्पोरेट डेटर पर, दोनों है ये. यस प्लीज, आप पढ़िए. सच ऑफिसर, Such officer of the corporate debtor or the corporate debtor, as the case may be, shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 1 year, but which may extend to 5 years, or with fine which shall not be less than 1 lakh rupees, but may extend to 1 crore rupees, or with both. तो इसका कोड हमारा क्या बन जाएगा, 1115. ठीक है, 1 लाख टू 1 करोड़, 1 year to 5 years. जैसे पहले 68 का कोड हमारा बन गया था 1135, 3, यहां पर हो गया 1115. 5. ठीक है जी. अब प्रोवाइडेड दैट, ये भी पढ़ लीजिए. Provided that a person shall not be punishable under this section if the acts mentioned in clause A were committed more than 5 years before the insolvency commencement date, or if he proves that at the time of commission of those acts he had no intent to defraud the creditors of the corporate debtor. सो पहला क्या है कि अगर 5 years से पहले हुए हैं, बिफोर द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, तो उस केस में पेनल्टी नहीं है नॉर्मली. ठीक है, कमिटेड मोर देन 5 years बिफोर द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट. ठीक है, अब यहां पर क्या बोलता है, Sir, in 68 also we have no concealed or removed any property. हाँ नहीं, डिफरेंस बिटवीन 68 एंड 69 आर देयर. 68 में क्या है, ओनली ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल. 69 में ऑफिसर और सीडी बोथ कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल. वहां पर की पीरियड कितना है, आइदर आफ्टर द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट और 1 year बिफोर इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट. यहां कितना है, यहां नॉर्मली है आफ्टर द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, यहां बिफोर नहीं होता. तो पर सर इसकी स्पेसिफिक जरूरत क्या है सेक्शन की, वो तो किसकी, वहाँ पे सेक्शन 69 की इसकी भाई देखो 69 की. ऐसा है ना, अलग अलग सेक्शन में अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं. अब 68 में क्या था, 68 में बेसिकली क्या है, 68 में तो ये है कि भाई डॉक्यूमेंट्स की भी बात कर रहा हूँ, यहाँ डॉक्यूमेंट्स की बात नहीं कर रहा, यहाँ प्रॉपर्टी की ही बात कर रहा हूँ. भाई मान लीजिए आपने क्या किया, आपने कोई बुक्स में फॉल्स एंट्री कर दी. ठीक है, ऑफिसर ने, वो 68 में चला जाएगा. 69 में उसको पता चला कोई डिग्री पास होने वाली है अगेंस्ट द सीडी, तो उसने क्या किया, प्रॉपर्टी को कंसील कर दिया या रिमूव कर दिया, तो उस केस में यहाँ आ जाएगा बेसिकली. या फिर आपने मेड और कॉज्ड एनी गिफ्ट और ट्रांसफर. ठीक है, आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी कि भाई क्रेडिटर्स, बेसिकली तो प्रॉपर्टी किसको बिलोंग करती है, क्रेडिटर्स को बिलोंग करती है. हाँ जी. क्रेडिटर के बजाय आपने किसी और को ट्रांसफर कर दी, या तो फ्री फंड में, है ना, लिखा ना, मेड और कॉज्ड एनी गिफ्ट और ट्रांसफर और चार्ज. तो इसमें क्या है, बेसिकली द इंटेंट इज ऑन कीपिंग इट अवे पनिशमेंट फॉर ट्रांजेक्शन डिफ्रॉडिंग क्रेडिटर. इंटेंशन क्या है, क्रेडिटर्स को डिफ्रॉड करना, ये इंटेंशन है. और वहां पर क्या है, ये कंसीलमेंट है, कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी. नहीं सर, एफ में देखिए, ई में भी, ई में कहता है फ्रॉडलेंटली पार्टेड विद और ऑल्टर्ड और मेड ओमिशन, ये तो डॉक्यूमेंट की हो गई. फिर एफ में बोलता है विलफुली क्रिएटेड एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड और डिस्पोज ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ द सीडी विच हैज बीन ऑब्टेन्ड ऑन क्रेडिट.
अच्छा, and has not been paid for unless. एक्चुअली क्या है यहाँ यहाँ इंटेंशन डिफ्रॉडिंग क्रेडिटर्स की बात नहीं कर रहा, या तो सिर्फ एक्ट की बात कर रहा है 68 में। और यहाँ क्या है, यहाँ स्पेसिफिकली पर्पज है फॉर डिफ्रॉडिंग द क्रेडिटर्स, क्रेडिटर को ना मिल जाए बस, इसीलिए ट्रांसफर किया उसने। और ऑफिसर भी है और सीडी भी है, दोनों है इसमें। ठीक है। और इसके अलावा ये है कि ये ज्यादा पीछे तक चला जाएगा, ये 5 साल तक पीछे चला जाएगा, उसमें 5 साल तक नहीं जाएगा, उसमें 1 साल तक पीछे एक जाएगा। साल तक। ठीक है। है ना। राइट सर। तो ये कुछ चीजें हैं, दोनों में ये फर्क है। चलिए 670, सेक्शन 70 पढ़ लीजिए मैडम सुप्रिया जी। सर सेक्शन मैं पढ़ देता 70 हूँ, मैं पढ़ देता आप पढ़ दिए मैंने गुप्ता जी, यस सेक्शन 70। हूँ। पनिशमेंट फॉर मिसकंडक्ट इन द कोर्स ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। अब यहां पर क्या हो गया, ये सीआईआरपी में कुछ गड़बड़ हुई है, इस प्रोसेस में गड़बड़ हुई है। पहले वालों में क्या था, ऑफिसर ने किया है, दूसरे राइट में सर। क्या था, ऑफिसर या सीडी ने किया है। राइट पहले में सर। 1 साल तक पीछे जा सकते हैं, दूसरे में 5 साल तक 5 साल पीछे तक। जा सकते हैं। और ठीक है। यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है मिसकंडक्ट हुआ इन कोर्स ऑफ सीआईआरपी। अब राइट। मिसकंडक्ट कौन कर सकता है, मिसकंडक्ट कोई भी कर सकता है, सीडी भी कर सकता है, आरपी भी कर सकता है। तो दोनों के लिए अलग अलग पेनल्टी दे दी इन्होंने। ठीक है। ठीक है, राइट सर। आईपी के लिए अलग दे दी और सीडी के लिए अलग दे दी। यस। On or after the insolvency commencement date, हम्म where an officer of the corporate debtor हम्म uh, does not disclose to the resolution professional all the details of the property of the corporate debtor हम्म and details of the transaction thereof, or any such other information as the resolution professional may require, हम्म or does not deliver to the resolution professional all or part of the property of the corporate debtor in his control or custody and which he is required to deliver, or does not deliver to the RP all books and papers in his control or custody belonging to the corporate debtor and which he is required to deliver, or fails to inform their solution professional the information in his knowledge and that a debt has been falsely proved by any person during the corporate insolvency resolution process. सर ये सोल्यूशन प्रोफेशनल नहीं होना चाहिए ना, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल होना चाहिए यहाँ पे। डी में, हम्म डी में यहाँ पर लिखा है फेल्स टू इन्फॉर्म दी सोल्यूशन प्रोफेशनल, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल होना चाहिए यहाँ पे ना। कहाँ लिखा है, सर डी पॉइंट। डी मैं पॉइंट आप, में। हाँ, हाँ, रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ही लिखा है, आ रही है मेरी बुक यार। में तो ठीक लिखा है। तो मैंने वही, 71D। हाँ मैंने तो आपके अलग ही प्रिंट निकाला है सर। अच्छा वहां हो सकता है, अच्छा उसमें से गलत वो कोई वो आर ही अलग चला गया होगा, कुछ होगा उसमें। हाँ जी, ठीक हाँ है, जी सर। रेजोल्यूशन कर लीजिए उसको, यस। ठीक सर। prevents the production of any book or paper affecting or relating to the property or affairs of the corporate debtor, or accounts for any part of the property of the corporate debtor by fictitious losses or expenses, or if he has so attempted at any meeting of the creditors of the corporate debtor within the 12 months immediately preceding the insolvency commencement. तो बेसिकली क्या है भाई, Debt. ही हैज टू हैंड ओवर द कस्टडी एंड कंट्रोल। ठीक है, प्रॉपर्टी पेपर्स जो भी है, इंफॉर्मेशन ट्रांजैक्शंस, उसमें कुछ भी गड़बड़ करता है तो उसके ऊपर पेनल्टी है। ठीक है, ठीक मिसकंडक्ट है इन कोर्स ऑफ सीआईआर, मिसकंडक्ट है। वुड बी डन आइदर बाय द ऑफिसर ऑफ द सीडी सीडी और आरपी ऑल्सो। तो ऑफिसर ऑफ द सीडी के ऊपर अलग पेनल्टी है, और जो आरपी है उसके ऊपर अलग है, आरपी के ऊपर कम है। ठीक है, तो यहाँ 1 लाख टू 1 करोड़ है और 3 years to 5 years है, तो 1135 हो जाएगा इसका कोड। है ना। और चलिए 70 दूसरा, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के ऊपर कितना पेनल्टी हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 1 लाख टू 5 lakhs। ठीक है, तो इसको हम कर सकते हैं, इसमें ये एक्सटेंड कर करोड़ नहीं सकते है तो हैं। इसको आप 105 दे दीजिए, बेशक 1056 दे दीजिए कोड, जैसे आपको याद रहे वैसा कर सही। सकते हैं। है ना, हाँ जी सर। कितना या सर, वन 10? 1506 कर सकते हैं। हाँ जी, 1506? हाँ 1506 कर दीजिए, क्योंकि मंथ्स है ना, तो 6 मंथ्स उससे याद रहेगा। ठीक है। हम्म अब इसमें सर इंपॉर्टेंट मैं, बात क्या है सेक्शन 70 में, सेक्शन 70 में टाइमिंग इज इंपॉर्टेंट, ऑन और आफ्टर द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। ठीक है ना,
ये भी इंपॉर्टेंट है कि पीरियड कौन सा कवर्ड है। तो एक कॉलम पीरियड कवर्ड का हो गया हमारा, एक पेनल्टी का हो गया। नाउ 71, 71 क्या है? पनिशमेंट फॉर Punishment फॉल्सिफिकेशन ऑफ बुक्स। पढ़िए एक बार जरा। on and after the insolvency commencement date, where any person destroys, mutilates, alters or falsifies any books or papers or securities, or makes or is in the knowledge of making of any false or fraudulent entry in the register books of accounts or documents belonging to the CD with the intent to defraud or deceive any person, he shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 3 years, but which may extend to 5 years, or हम्म। with a fine which shall not be less than 1 lakh rupees, but which may extend to 1 crore rupees, or with both. अब आप देखिए, अगर आप इफ यू रीड सेक्शन 68(1)(d), एक बार 68(1)(d) पढ़िए। एक second, sir. 68। Willfully made any false entry in any book or paper affecting or relating to the property of the corporate debtor or its affairs. अब देखिए 68(1)(d) और 71, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? कैन यू टेल मी? सर ये बात करता है ऑन और आफ्टर द इंसॉल्वेंसी हाँ कमेंसमेंट डेट, है हाँ ना? तो हाँ। हाँ, तो ये बात कर रहा हूँ, नहीं ये तो मैंने गलत कर दिया, सॉरी। नहीं ऑन देखो, और आफ्टर द इनमें फर्क क्या इंसॉल्वेंसी है? कम वहां ये काम कौन कर रहा है 68 में? ऑफिसर ऑफ द सिटी। ऑफिस। Officer. हाँ जी। यहां पर कौन कर रहा है? एनी पर्सन। Duty. दोनों में फर्क है। भाई ऑफिसर बोलता है अपने पीएन को, भाई तुम डॉक्यूमेंट्स में आग लगा दो, तो वो कहाँ का होगा? 71 में। ठीक है। ठीक है। यहाँ एनी पर्सन है, वहां क्या है? ऑफिसर है। ऑफिसर है। ठीक है ना? तो बेसिक बात यहां पर है एनी पर्सन। मान लो सर्वेंट ऑफ द सिटी है, इफ ही सेटिंग रिकॉर्ड्स ऑन फायर, तो इट विल बी कवर्ड अंडर 71। तो ये डिफरेंस है। बाकी ऑलमोस्ट सेम सा है, 68 और 71। फॉल्सिफिकेशन ऑफ बुक्स है बेसिकली। तो कोड इसका हो जाएगा 1135। चलिए नेक्स्ट। पनिशमेंट फॉर विलफुल एंड मटेरियल ओमिशंस फ्रॉम स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू अफेयर्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटर। हाँ, अब यहां पर क्या कर रहा है? यह विलफुल और मटेरियल ओमिशंस दे रहा है फ्रॉम स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू अफेयर्स ऑफ द सीडी। बिकॉज अब बात क्या है, जो ऑफिसर ऑफ द सीडी है, ही मेक्स एनी मटेरियल एंड विलफुल ओमिशन इन एनी स्टेटमेंट। भाई आपको क्या है कि यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन सर्टेन थिंग्स, तो आप उसमें से कुछ चीज छुपा जाते हो, कुछ विलफुल ओमिशन कर देते हो, है ना? तो उस केस में ये 72 लग जाएगा। और 72 में क्या बोलता है? इसका पीरियड कुछ नहीं वेयर दिया हुआ, टाइम लिमिट कुछ नहीं है इसमें। ये नहीं लिखा ऑन और आफ्टर द कमेंसमेंट डेट या बिफोर इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, कोई टाइम लिमिट नहीं है इसमें। ये ध्यान में रखना। तो सर जब वो स्टेटमेंट देगा तभी तो कर रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल हम्म। बिल्कुल। पर ऐसा नहीं ना कि भाई उसने इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट के बाद ये स्टेटमेंट दी या पहले दी, कब किया। पीरियड इज नॉट इंपॉर्टेंट, टाइम लिमिट इज नॉट इंपॉर्टेंट, कभी भी दिया उसने कोई कभी ऐसा, भी। तो इसमें कवर हो जाएगा। हाँ जी ओके नेक्स्ट। सर। पनिशमेंट फॉर फॉल्स रिप्रेजेंटेशन टू क्रेडिटर्स, हाँ। where any officer of the corporate debtor हम्म। or on or after the insolvency commencement date makes a false representation or commits any fraud for the purpose of obtaining the consent of the creditors of the corporate debtor or any of them to an agreement with reference to the affairs of the corporate debtor during the corporate insolvency resolution process or the liquidation process. सो पहले में क्या है? पहले में यह ही इज मेकिंग एनी फॉल्स रिप्रेजेंटेशन और कमिट्स एनी फ्रॉड। पर्पस क्या है? टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ द क्रेडिटर्स। जैसे मान लीजिए कंसेंट ऑफ द क्रेडिटर्स ऑन एनी रेजोल्यूशन प्लान, है ना? तो इस तरह से कोई फॉल्स रिप्रेजेंटेशन देता है या कोई फ्रॉड कमिट करता है, पर्पस इज टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ द क्रेडिटर्स। बिकॉज अभी क्या है, जो मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट इज नॉट इन पावर। ठीक है। तो बेसिकली क्रेडिटर्स आर एक्टिंग। अब मैनेजमेंट क्रेडिटर को कोई चीज समझा दे ऐसे कि भाई उनकी कॉन्सेंट ऑब्टेन करने के लिए, ये है इसमें। ठीक है। ऑन और आफ्टर द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट, बिकॉज द पावर्स ऑफ द बोर्ड स्टैंड सस्पेंडेड। नाउ सपोज एनी ऑफिस, एनी डायरेक्टर ऑफ द सीडी, है ना, ही गेट्स इन टच विद सी, वो जो सीओसी मेंबर्स, और उनको कुछ कहानी पढ़ा देता है ना, तो वो इसमें कवर हो जाएगा, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। और सेकंड क्या है? प्रायर टू द Prior इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट हैज मेड एनी फॉल्स रिप्रेजेंटेशन और कमिटेड एनी फ्रॉड। तो दोनों चीजें कवर हो गई, ऑन और आफ्टर इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट भी हो गई और प्रायर टू इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट भी हो गया। ठीक है। तो उसमें क्या होगा? ये पनिशमेंट है 1 लाख टू 1 करोड़, 3 years to 5 years, तो 1135।
अब ज्यादातर आप देखेंगे या तो 1135 आ रहा है या 1115 आ रहा है। तो आपको इस तरह से भी याद में रख लेना है कि पनिशमेंट किस में ज्यादा है किस में कम है। क्योंकि वो क्या करेगा, ही विल गिव यू द एक्ट इन द एग्जाम, ही विल गिव यू द एक्ट दैट ए सर्वेंट ऑफ द सीडी पुट्स ऑन फायर सर्टेन डॉक्यूमेंट्स, सो विच ऑफ द फॉलोइंग शैल बी द पेनल्टी लेविड इन सच ए सिनेरियो। वो चार पेनल्टी दे देगा आपको, उनमें से आपको एक सेलेक्ट करनी है। इस तरह वो एक्चुअल सिचुएशन देगा आपको एंड यू टू सेलेक्ट द पेनल्टी। या उल्टा भी कर सकता है कि ये पेनल्टी है, व्हाट कुड बी द प्रोबेबल एक्ट, ऐसा भी बना सकता है। आपको पेनल्टी दे दिया एंड दे आर सेइंग कि भाई ये इनमें से कौन सा एक्ट किया होगा उसने कि ये वाली पेनल्टी लगी होगी। चलिए 74। Punishment for contravention of moratorium or the resolution plan. अब Where इसमें where देखिए the 74 में ना कॉन्ट्रावेंशन ऑफ मॉरेटोरियम है सभी केसेस, लेकिन फर्क क्या है, कॉन्ट्रावेंशन किया किसने है। ठीक है, अब कॉन्ट्रावेंशन कोई भी कर सकता है, सीडी या उसका ऑफिसर भी कर सकता है, कोई क्रेडिटर भी वायलेट कर सकता है ना। तो या फिर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कर सकता है, या कि जिसके ऊपर रेजोल्यूशन प्लान बाइंडिंग है वो कर सकता है। तो बात इसमें यह है कि मॉरेटोरियम का कॉन्ट्रावेंशन किया किसने है, उसके हिसाब से पेनल्टी है। 74 में पढ़िए प्लीज। where the corporate debtor or any of its officer violates the provision of section 14, any such अच्छा, officer. इसका कोई एग्जांपल दे सकते हो आप कि ऑफिसर ने कॉन्ट्रावेंशन कर दिया सेक्शन 14 का, तो क्या इंस्टांस हो सकता है भाई, इफ ही हैज ट्रांसफर्ड, इफ ही हैज encumbered, if he has alienated or disposed of any assets of the CD, ठीक है ना, विच इज हाँ प्रोहिबिटेड अंडर सेक्शन 14, तो कॉन्ट्रावेंशन हो जाएगा। ठीक है ना। तो उस केस में पेनल्टी कितनी है, 1 लाख टू 3 लाख, 3 years to 5 years। तो इसमें सबसे कम पेनल्टी है, आप देखो, है ना। ये सेक्शन है विद लीस्ट फाइन, 1 लाख टू 3 लाख, 3 लाख कहीं भी नहीं है, नहीं 1 लाख टू 1 करोड़ है नॉर्मली, यहाँ 1 लाख टू 3 लाख है। ये ध्यान में रखनी है ना। चलिए नेक्स्ट। Where any creditor violates the provision of section 14, any हम्म person who knowingly and willfully authorized or permitted such contravention by a creditor shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 1 year, but may extend to 5 years, or हम्म with fine which shall not be less than 1 lakh rupees, but may extend to 1 crore rupees, or with both. तो हियर एनी क्रेडिटर इज वायलेटिंग, ठीक है, any person who knowingly and willfully authorized or permitted such contravention, because creditor can also not taken any action under surface, है ना, actions under Right, surface sir. are barred। Suppose creditor takes any action under surface and any person who knowingly and willfully authorized or permitted such contravention by a creditor, ठीक है। तो सर ये पर्सन हुआ ना, पर्सन को सजा हुई हाँ, ना, पर्सन के ऊपर पेनल्टी लग गई। पर्सन के ऊपर लगे, ठीक है सर। ठीक है जी, क्रेडिटर थर्ड में कवर हो गया, तो इन्वोकेशन एक्शन अंडर सरफेस इसमें कवर हो जाएगा। और अगर आरपी ने कोई एक्शन नहीं लिया, आरपी ने कुछ नहीं बोला उसको। और थर्ड देखिए, Where the corporate debtor, any of its officers or creditors, or any person on whom the approved resolution plan is binding under section 31, knowingly and willfully contravenes any of the terms of such resolution plan or abets such contravention, such corporate debtor, officer, creditor, or person shall be punishable with imprisonment of not less than 1 year, but may extend to 5 years, or with fine, which shall not be less than 1 lakh rupees, but may extend to 1 crore rupees, or with both. हम्म तो ये आ गया हो गया सर, अब आपका 75 है। सीडी और एनी ऑफिसर ऑफ द सिटी, ठीक है, और एनी क्रेडिटर और एनी पर्सन ऑन whom the approved resolution plan is binding। तो कॉन्ट्रावेंशन, कॉन्ट्रावेंशन किसने किया उसके हिसाब से देखिए पेनल्टी भी डिफरेंट है ना। अगर कॉन्ट्रावेंशन सीडी ने या उसके ऑफिसर ने किया है तो उसके ऊपर पेनल्टी कम है, 1 लाख टू 3 लाख है, लेकिन इंप्रिजनमेंट ज्यादा है, 3 to 5। क्रेडिटर ने वायलेट किया तो जो पर्सन जिसने अलाउ किया उसके ऊपर पेनल्टी है। और अगर रेजोल्यूशन प्लान, अप्रूव्ड रेजोल्यूशन प्लान बाइंडिंग है
एंड इफ somebody contravenes तो फिर पेनल्टी डिफरेंट है। तीनों चीज में पेनल्टी डिफरेंट है। इन दोनों में तो सेम ही है, 1 लाख to 1 करोड़ एंड 1 year to 5 years। सिर्फ अगर सीडी के ऊपर पेनल्टी कम है इसमें। दिस इज 74, नाउ 75। पनिशमेंट फॉर 75 फॉल्स एक ऐसा सेक्शन है जिसमें इंप्रिजनमेंट है ही नहीं, है ना। चलिए। where any person furnishes information in the application made under section 7 which is हम्म false in material particulars, knowing it to be false, or omits any material fact knowing it to be material, हम्म such person shall be punishable with fine which shall not be less than 1 lakh rupees but may extend to 1 crore rupees. हाँ, तो यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट नहीं है, सिर्फ फाइन ही फाइन है, 1 लाख to 1 करोड़। सेक्शन 7 की एप्लीकेशन। इसी तरह से सेक्शन 9 के लिए अलग है, सेक्शन 10 के लिए अलग है। 76 बात करता है सेक्शन 9 में आपने कुछ गलती कर दी तो। Where an operational creditor has willfully or knowingly concealed in an application under section 9 uh, of the Act that the corporate debtor had notified him of the fact that the corporate debtor had notified him of a dispute in respect of the unpaid operational debt or the full and final payment of the unpaid operational debt, or any person who knowingly and willfully authorized or permitted such concealment under clause A, such operational creditor or person, as the case may be, shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 1 year, but may extend to 5 years, or with fine which shall not be less than 1 lakh rupees, but may extend to 1 crore rupees, or with both. ठीक है। तो अब थोड़ा जल्दी कर लेते हैं इसको। 77 में सेक्शन 10 की बात करता है। तो सेक्शन 10 में क्या है, इसमें भी कोई टाइम लिमिट नहीं है कि कब उसने किया। क्या होना चाहिए, या तो ही हैज फर्निश्ड फॉल्स इन्फॉर्मेशन और ही ओमिट्स एनी मटेरियल फैक्ट। ठीक है। तो इसमें 1 लाख to 1 करोड़ है और 3 years to 5 years। अब आप प्लीज नोट कि सेक्शन 75, 76 और 77 में पेनल्टी इंक्रीज हो रही है। ठीक है। 75 में कोई इंप्रिजनमेंट था ही नहीं, 1 लाख to 1 करोड़ था। तो 1100, इसका कोड हो जाएगा 1100। 0 0. ठीक है। और इसमें क्या हो गया, 1115। 76 में Right. ये सेक्शन 9 वाली है। और जब सेक्शन 10 है उसमें और ज्यादा पेनल्टी हो गई, 1135 हो गया। ये ध्यान में रखना कि पेनल्टी इसमें इंक्रीज हो रही है। तो जो फाइनेंशियल क्रेडिट सेक्शन 7 वाली एप्लीकेशन में कम है, सेक्शन 9 में उससे ज्यादा है, और सेक्शन 10 में उससे ज्यादा। इससे भी ज्यादा है। ठीक है। राइट सर। अच्छा, उसके बाद में 77A। 7A वाला है PPIRP प्रोसेस के ऊपर। ठीक है। और इस पे पेनल्टी किस पर लग रही है, सीडी या ऑफिसर डायरेक्टर वगैरह के ऊपर पेनल्टी लग रही है। ठीक है। ठीक तो इसमें क्या पेनल्टी है, 1 लाख to 1 करोड़, 3 years to 5 years। ठीक है। ठीक है तो ये सर। पेनल्टी प्रोविजंस थे। अब आप जल्दी से मुझे बता दीजिए कि कौन सा सेक्शन ऐसा है जिसमें इम्प्रिजनमेंट है ही नहीं। सर 75 था ना। हाँ, No, 75 है। अगर सेक्शन section 7 की 7 एप्लीकेशन application. लगेगी तो उसमें हम्म, कोई भी इम्प्रिजनमेंट नहीं है। एक तो ये याद रह जाएगा, कोई मुश्किल बात नहीं है। हम्म, ठीक है, दिस वी कैन इजीली रिमेंबर। देयर इज नो इम्प्रिजनमेंट इन केस ऑफ Section 7. 75 सेक्शन 7 एप्लीकेशन। ठीक है, Yes. इतना याद रहेगा। दूसरा ठीक है। ये कि इन देर इज ए ग्रेजुअल इंक्रीज इन फाइन्स एंड पेनल्टीज, बल्कि देर इज ग्रेजुअल इंक्रीज इन इम्प्रिजनमेंट इन सेक्शन 7, 9 और 10। सेक्शन 7 में नो इम्प्रिजनमेंट, सेक्शन 9 में 1 to 5 years, और सेक्शन 10 में 3 to 5 years। ये भी याद रहेगा, कोई मुश्किल बात नहीं है। दीज टू थिंग्स वी कैन इजीली रिमेंबर। राइट सर। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये है कि ये जो कॉन्ट्रावेंशन है, 74 डील्स विद कॉन्ट्रावेंशन, एंड देर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रावेंशन। ठीक है। सीडी ने अगर कॉन्ट्रावेंशन किया तो मैक्सिमम पेनल्टी है इसमें, नहीं इसमें लीस्ट फाइन है। लीस्ट फाइन है 1 लाख to 3 लाख। 3 लाख वाला फाइन किसी में भी नहीं है, 1 लाख to 1 करोड़ ये सब में, यहाँ 1 लाख to 3 लाख लिखा। ठीक है। इंप्रिजनमेंट ज्यादा है, 3 to 5। तो इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा करके याद कर सकते हो। ठीक है। ये चार्ट आई हैव शेयर्ड ऑलरेडी, बट आई विल शेयर इट अगेन। ठीक है। ओके, सो हैव अ गुड डे। ठीक है बाकी सर। कल करते हैं।